Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Nilesh. Good morning, Sumit. Good morning, Bharat. Good morning, Jimmy. Good morning, Ranjit. Keep the charts clean. We'll start in 2 minutes. Good morning, Usman. चलो आज इन डिटेल में जाते हैं कैसे भी इंडियन सेशन नहीं है आज. So we'll go in detail explanation of how to identify the structures. ओके स्टार्ट करने से पहले किस किस को कौन सा डाउट्स है प्लीज बता दो so that I'll keep in mind while explaining. Good morning, Sumit. Identification of swing. Good morning, Venkat. आप लोगों को सीजनल वीडियो आज चाहिए या संडे के दिन? Sir, I was about to ask the same to prepare a detailed video and analysis after today's session. आप लोगों को सीजनल वीडियो आज के दिन चाहिए या संडे के दिन चाहिए? प्लीज सर प्लीज इंड्यूसमेंट कौन सा बनाना है वो बता दीजिए एक्सप्लेनेशन में.
अभी दो वीडियो। आज ओके। वर्षा लॉन्च द वीडियो एट 7। चलो यार, आप भी क्या याद रखोगे। मैं जोर से बात ही नहीं कर। हेलो हेलो। नाउ इज इट क्लियर? अभी दो वीडियो एग्जाम्स। गाइस, वन मोर पर्सन मिसिंग। वो आ जाने दो, वी विल स्टार्ट। आपको ना भूलेंगे कभी। सर, ऐसे डायलॉग मारने वाले हजार आए हजार गए जिंदगी में। Captured my first 550 pip swing yesterday night. Great, Samarth. गुड मॉर्निंग पटेल। सच बोल रहा हूँ भरत, हजार आए हजार गए। अंजलि, लोज लेट करती है यार तू। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। सब लोग आ गए। सो मेजरली स्टार्टिंग हमें, चलो यार, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं आज। हटाओ सब काउंट, हटाओ आईडी, हटाओ डिस्क्लेमर। सो व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट यू गाइस हैव टू फॉलो। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी कोई भी एनालिसिस करते हो, फर्स्ट चीज आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीओआई जोन इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो इन दिस पीओआई जोन, मेजर सर्कमस्टांसेस क्या आइडेंटिफाई करना होगा आपको। हर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में इस पीओआई जोन ऑफ एक्शन जो बिल्ड होता है ना, उस एक्शन पॉइंट में हमेशा आपको बायर्स एंड सेलर्स दोनों का एसएल हंट होते हुए दिखती है, राइट? उस एसएल हंट के साथ आपको हमेशा ट्रेड ऑफ एक्शन में बने रहना चाहिए।
So at the starting point of action, what are the major things that आप लोग कैरी फॉरवर्ड में याद रखना चाहिए, ये जानिए. राइट. एट दिस पॉइंट, वेयर इज माय फर्स्ट पीओए रेंज? नवंबर के मंथ में ये मेरा पीओए रेंज ऑफ एक्शन था विद अ इंड्यूसमेंट इन ए डेली टाइम फ्रेम. करेक्ट. इसके साथ मार्केट क्या किया? मार्केट ने मूवमेंट अलोकेट किया लॉन्ग के तरफ. राइट. डेफिनेटली यहाँ पे सब जो बेटे थे लॉन्ग के तरफ, उनको इस पॉइंट ऑफ एक्शन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया. बट इमीडिएटली अगर नोटिस करते हो, मार्केट नीचे भी आई, नीचे आके एसएल भी हंट किया. करेक्ट. जब एसएल भी हंट हुआ सेलर्स का एंड बायर्स का, व्हाट आर द प्राइस एक्शंस आप लोगों को फॉलो करके चलना चाहिए? राइट. मेजर प्लान ऑफ एक्शन आपका हमेशा होना चाहिए कि इस पीओए रेंज के बाजू में क्या आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई है या नहीं. राइट. सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी के लिए स्वीट एंड सिंपल में समझ लो कि हर एक रेड या ग्रीन कैंडल के साथ एक पार्टनर, या दो ग्रीन बना तो एक रेड बना, एक रेड बना तो दो ग्रीन. राइट. दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग, जो कि रिटेलर्स का बहुत फेवरेट चीज है, पैरेलल चैनल में रहना. So in this scenario, मैं एक parallel channel draw out करता हूँ. So this is my circulating supply zone of action, right? जैसे ही इस point of action में circulating supply generate होता है, majorly आप लोगों को क्या follow करके चलना होगा? यहाँ पे दो circumstances को identify करना होगा, जो कि क्या मेरा previous high range break हुआ है. सेकंड, क्या इस पॉइंट ऑफ एक्शन में रिटेलर्स को सपोर्ट से रेजिस्टेंस कन्वर्ट होते हुए दिखी है. राइट. बिकॉज मेजरली अगर जोन ऑफ एक्शन में 100% टच होते हुए दिखेगा, सपोर्ट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस, समझ लो वो ट्रैप होगा. अगर टच नहीं होती है, देन मार्केट कंटिन्यूटी में मूवमेंट जनरेट होते हुए दिखेगी. जब कंटिन्यूटी में मूवमेंट जनरेट होते हुए दिखेगी, मेजरली आप लोगों को क्या फॉलो करके चलना होगा? द सर्कमस्टेंशियल मूवमेंट प्लान ऑफ एक्शन. मतलब सर्कमस्टेंशियल प्लान ऑफ एक्शन मीन्स जो ब्रेक ऑफ अलोकेशन है, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, माइनर नहीं. जब माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जनरेट होते हुए दिखती है. राइट. इस पॉइंट ऑफ एक्शन में what is the major thing that you have to look? We have a major break of structure with the major break of structure continuity. तो इस प्लान ऑफ एक्शन में हमेशा याद रखिए 100% क्लोजर देगा, उसके साथ कंटिन्यूटी. राइट. कंटिन्यूटी के साथ ब्रेक थ्रू. डेफिनेटली डू वी हैव a रिजेक्शन? यस, वी डू हैव a रिजेक्शन. इज इट अ राइट रिजेक्शन? यस, डेफिनेटली एक राइट रिजेक्शन है. इसके साथ मेजर कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट अलोकेशन क्या होना चाहिए? हमेशा 150% एंड 200%. ये अभी हम डेली टाइम फ्रेम में है ऑन द एनालिसिस पर्सपेक्टिव. ओके. सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमेशा याद रखिए, जब भी एक सर्कमस्टेंशियल मूव एविडेंस क्रिएट होता है, तो यहाँ पे आपको रीअलोकेशन में 300% प्लान ऑफ एक्शन देखना होता है. राइट. जब 300% प्लान ऑफ एक्शन जब देखते हो, तब सर्कमस्टेंशियल स्विंग क्रिएट होती है. जब सर्कमस्टेंशियल स्विंग जब जनरेट होता है ना, तब मूवमेंट एक्शन प्लान डेवलप होते हुए दिखती है. राइट. मूवमेंट एक्शन प्लान डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, प्रीवियस डिमांड रेंज, ये हमारा सप्लाई मूवमेंट है. करेक्ट. सर्कुलेटिंग सप्लाई का जो हाफ पार्ट ऑफ रेंज है in this scenario, ये entire मेरा circulating supply है. Right. In that circulating supply, half part will be your retracement on 300%. Right. जैसे ही ये half part rejection दिखने को मिलेगी, that will be again a reversal zone of action. अगर मैं इस हाफ पार्ट एक्शन प्लान को मार्क करूं एंड उसके साथ कंटिन्यूटी में मूवमेंट देखूं, मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? पोस्ट 300%. what is the rejection that I am having? Exactly the 100% of the circulating supply. राइट. जब सर्कुलेटिंग सप्लाई का हाफ पार्ट ऑफ एक्शन जनरेट होते हुए दिखती है, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स?
द प्रीवियस एक्शन अलोकेशन देखना होगा. प्रीवियस एक्शन अलोकेशन कहाँ पे है एट द करेंट स्टेट ऑफ माइंड? फ्रॉम द रेजिस्टेंस टू द एंटायर 300% zone. This marking will act as your current movement plan. करेक्ट. सो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रीअलोकेशन देखोगे, रीअलोकेशन के साथ कंटिन्यूटी में बने रहोगे. राइट. ये होगा आपका डेली एनालिसिस का स्विंग अलोकेशन. राइट. जैसे ही डेली एलोकेशन, सॉरी, सॉरी जैसे कि डेली एनालिसिस का स्विंग अलोकेट होता है, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए? राइट. हमारा 50% जो सर्कुलेटिंग सप्लाई का मूवमेंट है, कौन सा पॉइंट है? बायर्स अलोकेशन. राइट. इस बायर्स अलोकेशन के साथ फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पे जनरेट होते हुए दिखी थी? इस पॉइंट ऑफ एक्शन. एंड ये कैसे एक्ट होगा? जो प्रीवियस सप्लाई है, वो प्रीवियस सप्लाई हमारा करंट मूवमेंट में डिमांड के जैसे एक्ट करेगा. इन दिस सिनेरियो, दिस इज माय प्रीवियस सप्लाई. अगर मैं प्रीवियस सप्लाई की मार्किंग देखूं, एग्जैक्टली द डिमांड जनरेट होती है. एंड ए प्रीवियस सप्लाई कहां से आएगा? द सप्लाई विल एक्ट फ्रॉम द इंड्यूसमेंट रेंज ऑफ एक्शन. अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करके देखूं, क्या ये मेरा जोन ऑफ एक्शन में है? यस, जोन ऑफ एक्शन में है. राइट. विद दिस रिजेक्शन एट 100% कितना मिलेगा? हमेशा जो हमारा प्रीवियस डिमांड अलोकेशन है, उतना ही आपको करंट स्टेट ऑफ एक्शन में दिखने को मिलेगी. राइट. जैसे कि इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमें अलोकेशन दिखने को मिला, हम यहाँ पे टू लेवल्स ऑफ कंडक्ट को अलोकेट करेंगे. कैसे? एट द सिनेरियो वन, ये मेरा सप्लाई है. राइट. ये मेरा सरप्लस नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिट्रेसमेंट के साथ कंटिन्यूटी में बना है. तो हम इस पॉइंट ऑफ एक्शन को रिट्रेसमेंट के साथ अलोकेट करेंगे. Right. So at this current scenario, what is my movement plan of action? Do we have a rejection? Yes, definitely I have a rejection. So I will mark out the rejection. But is this the right one? Definitely. अगर आप डे टू डे इंट्राडे में ट्रेड ऑफ अलोकेशन देख के चल रहे हो, ये सही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है. बट अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, what is the major point of interest that you will be looking? द मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप देखोगे कि मेरा सर्कुलेटिंग सप्लाई का जो 50% प्लान ऑफ एक्शन है, क्या उसका 100 to 150% का रिजेक्शन मेरे को मिला है या नहीं. अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में रिजेक्शन नहीं मिलता है, then we will look for the next. So at the current stage, मेरा सर्कुलेटिंग सप्लाई का 50% कहाँ पे है? इस पॉइंट ऑफ एक्शन है. राइट. इस पॉइंट ऑफ एक्शन में एग्जैक्ट रिजेक्शन मिला है. राइट. इस रिजेक्शन के साथ फर्स्ट अलोकेशन पॉइंट होगा. राइट. विद द फर्स्ट अलोकेशन पॉइंट, क्या मेरे को 100% क्लोजर दिया है यहाँ पे? यस, डेफिनेटली दिया है. विद द 100% क्लोजर, व्हाट आई विल बी लुकिंग? 150%. क्या मेरे पास 150% रिजेक्शन है यहाँ पे? डेफिनेटली आई एम हैविंग 150% रिजेक्शन. करेक्ट. सो इस बेसिस में मेरा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? जो कि मेरा एंटायर मूवमेंट अलोकेशन ऑफ post the retailer's hunt will be your reallocation point. In this scenario, 150% will be your surplus. 150% surplus के साथ continuity 200% का target. So this is how you look into the circumstances of entire daily swing analysis. राइट. जैसे ही हमारे पास डेली स्विंग एनालिसिस आया, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू विल बी फॉलोइंग? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है? द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन इज मैथमेटिकल नंबर्स. मैथमेटिकल नंबर्स के लिए हमारा स्विंग लो ये होगा, हमारा स्विंग हाई सर्कुलेटिंग सप्लाई की हाई पॉइंट होगी, एंड रिट्रेसमेंट विल बी सर्कुलेटिंग सप्लाई का जो रिट्रेसमेंट कन्वर्ट नहीं होते हुए दिखा है, वो हमारा मेजर रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन होगा. So what is the swing high? The swing high is 2786.480. Swing low is 2574.975, and my retracement point is 2731.120. इसके साथ मेरा intermediate ratio is at 3170.320.
राइट। सो ये आप कैलकुलेशन कर लेना। उसके साथ कंटिन्यूटी में नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए मेरा, 4 आवर्स में आएंगे। 4 आवर्स में मेजर सर्कमस्टांशियल मूवमेंट तो आपको मिल गया है, राइट। इसके साथ व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू विल बी आइडेंटिफाइंग, बिकॉज आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे होगा, द एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा विद द पीओआई रेंज स्टार्ट होगा। इन दिस सिनेरियो आई हैव माय सेकंड पीओआई रेंज, राइट। जैसे ही मेरा सेकंड पीओआई रेंज ऑफ एक्शन बिल्ड हुआ, व्हाट इज द मेजर थिंग, एसएल किसका लिया है यहाँ पे, सेलर्स का, उसके साथ बायर्स का, राइट। बायर्स अलोकेशन पॉइंट के साथ रीसर्कमस्टेंशियल मूवमेंट, मतलब ये मेरा फर्स्ट 100% एक्शन प्लान होता है, विद द एक्शन प्लान द मूवमेंट ऑफ सेकंड, राइट। विद द सेकंड प्लान ऑफ एक्शन आपको यहाँ पे क्या दिखने को मिलेगी, 150% की रिजेक्शन, राइट। विद द 150% रिजेक्शन, कंटिन्यूटी अलोकेशन, राइट। जब मैं कंटिन्यूटी अलोकेशन में अलोकेट करूंगा, व्हाट आर द मेजर थिंग्स आप लोगों को यहाँ पे नोटिस करते हुए दिखेंगे, a rejection. And what is this rejection called as? This rejection is called as surplus movement. Surplus supply, राइट। जब सरप्लस सप्लाई जनरेट होता है, हमेशा याद रखिए एक छोटा सा पीओआई रेंज ऑफ एक्शन जनरेट होगा। उस पीओआई एक्ट ऑफ मूवमेंट में नेक्स्ट प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन दिखने को मिलेगी। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में रिटेलर्स को हर एक रेजिस्टेंस में ट्रैप करेगा। उसके साथ कंटिन्यूटी कितना दिखने को मिलेगी आपको, जितना एंटायर मूवमेंट प्लान ऑफ एक्शन ऑफ सरप्लस है, उतना पूरा मूवमेंट एक्शन प्लान आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। इन दिस सिनेरियो दिस इज माय नेक्स्ट 100% ऑफ सरप्लस मूवमेंट प्लान, राइट। जब मेरा सरप्लस मूवमेंट प्लान ऑफ अलोकेशन हुआ, व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट आई विल बी लुकिंग, क्या ये 100% कवर अप हुआ, with the 100%, the next point of interest will be taken under the consideration of previous, right? Previous action plan में मेरा POI range क्या है? मेरा entire POI range will act as the first point, right? The first point of interest को mark out करेंगे, right? With the mark out, do we have a breakthrough? With the breakthrough, क्या यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन डेवलप होते हुए दिखा है? यस, डेफिनेटली दिखा है। विद दैट स्मॉल प्लान ऑफ एक्शन, second indication will be your 200%. Do we have a rejection of 200% over here? Yes, we do. So this will be acting as our major demand allocation again, right? So in this point of interest, this will be my 200% demand. राइट, विद द 200% डिमांड, नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन क्या होगा हमारे पास, द मूवमेंट सर्कमस्टांशियल बिल्ड। क्या हमारे पास यहाँ पे अलोकेशन में प्रेशर किसका है, बाइंग, बाइंग। डेफिनेटली यहाँ पे विक क्रिएट हुआ है टुवर्ड्स द सेलिंग एज वेल, बट ये सेलिंग विक्स जो क्रिएट हुए हैं, ये एक ट्रैप ऑफ अलोकेशन है। ट्रैप ऑफ अलोकेशन कैसे, अगर मैं फिब लेवल लेता हूँ, टॉप टू बॉटम ड्रॉ करता हूँ, what do we notice? Retailers execute the trade at zero point 0.5 and zero point 0.6. That is the plan of action which has been created at this point. Right? इस point of action के साथ हमारा next execution होगा. The next execution point of interest will always be with the previous surplus movement. So इस scenario में ये मेरा entire surplus movement है. Entire surplus movement will act as my new supply because we have a retracement. With the retracement continuity, what do we notice? We have a 100% break. 100% break के साथ merger के साथ continuity. If I look in perspective of the mergers, what do we notice? Again we have a breakthrough, right? Breakthrough point of interest, allocation 1, with the allocation 1 यहाँ पे entry point of action create होती है. With the entry point of action, what will be the plan of action? Entry point
is to B1 setup and continuity. In this scenario, where do we have a S to B1 setup? अगर मार्कआउट में देखूं तो दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन, राइट? जैसे ही मेरे पास यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन डेवलप होते हुए दिखी है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट आई विल बी फॉलोइंग? नेक्स्ट स्टेप इस प्लान ऑफ एक्शन में कंटिन्यूटी ऑफ द मूवमेंट। कंटिन्यूटी डेफिनेटली बीच बीच में रिट्रेसमेंट आया है, 4 आवर्स है, स्विंग ट्रेड है, डेफिनेटली आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है इस पॉइंट ऑफ एक्शन में। आप लोगों को सिर्फ अलोकेट करके चलना है हर एक मूवमेंट एक्शन प्लान। इन दिस सिनेरियो मेरा एक्शन प्लान ऑफ कंडक्ट क्या है एट द करेंट स्टेज? ये मेरा डिमांड है, ये डिमांड को वी विल लुक इनटू द रीस्पेक्ट्रो, रिजेक्शन, 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 राइट? मैंने कुछ नया किया, जो पुराना डिमांड है वही कंटिन्यूटी में मूवमेंट में गया, राइट? जैसे ही कंटिन्यूटी में मूवमेंट किया है, डेफिनेटली वेयर आर वी लुकिंग फॉर एन एक्शन प्लान एट द करंट स्टेज? द एक्शन प्लान इज एग्जैक्टली एट 200% सप्लाई, right? In this 200% supply, what is the major thing that you will be noticing? क्या हमारे पास इस प्लान ऑफ एक्शन में 150% का रिजेक्शन है? यस, आई विल शोकेस यू दैट ऑल्सो। 150% and 200%. Right? If I look in the perspective of to the previous point of allocation, where will be my point of interest? The point of interest is over here. Do we have a rejection from the same spot? We do have a rejection from the same spot. So that will be your lookout of market analysis, right? जैसे ही market ने rejection लिया, 200% cover up किया, क्या किया यहाँ पे? Market structure completed the daily time frame, राइट? डेली टाइम फ्रेम के मूवमेंट के साथ रिकंटिन्यूटी ऑफ द बिल्ड कितना दिखाएगा? जो कि हमेशा याद रखना, हमारा प्रीवियस डिमांड रेंज जो कि सरप्लस 100% से जो लिया है, दैट विल एक्ट एज योर करंट पॉइंट, right? In this state of action, this is my first point of invitation. With the first point of invitation, 150% rejection, right? So ये हमारा allocation होगी, हमेशा याद रखिए। With this, the major action point will be your 150% breakthrough. With the 150% breakthrough, 200% rejection, right? So this is the plan of actions that will be taken under the consideration of the previous. So is point of interest में what are the major circumstances which will be taken under the consideration? The major circumstances will be into the previous points. कैसे? We will look into that next. Right? ये हमारा 150% डिमांड है, with the 150% डिमांड 200% डिमांड। क्या मार्केट ने रिजेक्शन लिया है यहाँ पे? डेफिनेटली मार्केट ने इस पॉइंट ऑफ एक्शन में रिजेक्शन लेते हुए दिखी है, राइट? दिस विल बी द सरप्लस मूवमेंट एक्शन प्लान। जैसे ही सरप्लस एक्शन प्लान जनरेट होते हुए दिखता है, क्या नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो होगा आपका? जो कि आपका प्रीवियस एंटायर मूवमेंट एक्शन प्लान ऑफ द फर्स्ट डिमांड ऑफ द सरप्लस, वो होगी कंटिन्यूटी में रीबैकिंग, राइट? रीबैकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? रीबैकिंग स्ट्रक्चर जो कि हर एक रिटेलर्स को ट्रैप अलोकेट में बिठाता है। ट्रैप अलोकेट मतलब एवरीवन हैज अ फोमो, राइट? जब फोमो क्रिएट होता है मार्केट में, क्या होती है? मार्केट में पैनिक दिखती है। जब पैनिक दिखती है, रिटेलर्स हमेशा रनिंग ट्रेड में शॉर्ट की तरफ दिखेंगे, बट मार्केट विल क्रिएट बैक द एक्शन प्लान टू री इवेल्युएट द लिक्विडिटी। रीइवेलुएट द लिक्विडिटी जब जनरेट होने को दिखती है, द फर्स्ट एक्शन प्लान विल ऑलवेज बी 100%। with the 100% structure, 150% will be the breakthrough. In this scenario, do we have a 150% breakthrough? Yes, we do. So what is this movement called as? This movement is called as evaluate structure of liquidity.
right? This will always act in perspective of 100% demand closure. With the 100% demand closure, 150% will be your target plan. 200% is a very rare scenario इस structure में work होना. Okay, so this is my 150 with the 150 100, right? इस point of interest में movement allocate होती है and continuity में develop होती है, right? उसी उसी हिसाब से नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शंस क्या होगा हमारा? द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन प्लान विल बी इन अलोकेशन ऑफ द प्रेशर्स, राइट? हमारा 4 आवर स्ट्रक्चर क्लियर है? इस 4 आवर स्ट्रक्चर के साथ मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या देखने को मिलेगी? मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका प्रीवियस रेंज ऑफ कंडक्ट के साथ बिल्ड होते हुए दिखेगा. प्रीवियस रेंज ऑफ कंडक्ट मतलब जो कि हर एक रिटेलर को ट्रैप किया है, राइट? ये हमारा ट्रैप मूवमेंट है. सो इस ट्रैप मूवमेंट अलोकेशन को हम बोलेंगे प्रीवियस प्रेशर अलोकेशन. If we notice, what do we see over here? The green candle has exactly created the movement plan as per the evaluation of the previous, right? जब evaluation of the previous create होती है, हमेशा याद रखना the movement action plan will be as per the requirements of the next. मतलब liquidity calibration generate होते हुए दिखेगी. liquidity calibration मतलब जब एक कैंडल शॉर्ट की तरफ बिल्ड हुआ है, जब एक कैंडल शॉर्ट की तरफ बिल्ड हुआ है, उसके साथ इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन में जब नेक्स्ट कैंडल कवर अप लेती है, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी कैलिब्रेशन. ओके, इस कैलिब्रेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मेजरली क्या होता है? हाई वॉल्यूम ट्रेडेबल आइसबर्ग्स होते हैं. इस आइसबर्ग ऑर्डर्स के साथ market will just create a panic movement for the retailers and continuity in the structure, right? So here this point of action was taken under the consideration of liquidity calibration. Okay, so if you notice, there was a green candle, immediate closure was the red candle. So in this point of interest, what are the major things that needs to be focused? किस चीज के ऊपर आपको focus होना चाहिए? जब liquidity calibration generate होता है, the point of interest of the previous market हमारा 200% सप्लाई कहाँ पे कंप्लीट किया था? ये हमारा 200% सप्लाई रेंज ऑफ एक्ट है, राइट? सो ये जो रिजेक्शन पॉइंट रहेगी, हमेशा याद रखिए, यही रिजेक्शन पॉइंट कंटिन्यूटी में रीबिल्ड स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगी, राइट? रिबाउंड इफेक्ट बोलते हैं इसे. इस रिबाउंड इफेक्ट विल बी ऑलवेज फ्रॉम योर प्रीवियस पॉइंट. जब भी रिबाउंड इफेक्ट दिखता है, 200% का रेंज मार्किंग के साथ ही रिबाउंड इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए. Okay, once the rebound effect is identified, the movement structure plan कितना होगा? Because this is a swing trade, swing trade में हमेशा एक चीज याद लेके चलो, the movement plan of action of entire 200 supply, मतलब मेरा जो कैंडल अलोकेशन है यहाँ पे सप्लाई का 200% का, that will act as my current movement plan of action, right? So in this scenario ये मेरा entire 200% का first range of act है, right? इसी point of interest के साथ मैं क्या करूंगा? यहाँ पे continuity built है. With the continuity restructure analysis होने के बाद, which month is it going on? April. Seasonal allocation, minimality zone of action. Minimality zone of action जब create होता है, क्या होता है? मार्केट हमेशा 150% and 200% रिजेक्शन लेती है, right? So this is the plan of actions that you guys needs to have always in the spectrum movement allocation.
right? यहाँ पे spectrum movement allocation will be identified through the break. If you notice, we have a rejection. And अगर ये rejection कितना perspective में है, अगर notice करोगे, it is of 300 pips, and no one has the point of interest to give market SL a 300 pips, right? With this, majorly क्या देखना चाहिए हमें? The major action plan हमें identify करना होगा, which will be acting as my current zone of conduct, right? Current zone of conduct को कैसे identify करेंगे? With the previous action plan, right? With the previous action plan, what is the major point of interest जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे? Structure imbalance point of interest. Minimality, 200% minimality. Right? And minimality हमारे पास कहाँ पे थी यहाँ पे? At this point of interest, the minimality zone of action was acted into the previous zone of this movement. Right? अगर in depth करूँगा, जो rebound effect है, that will act as my current movement action plan of minimality zone. Right? With this minimality zone of action, market ने यहाँ पे क्या allocate करते हुए दिखी है हमें? Movement breakthrough of 200% and continuity, right? In this structure plan of analysis, where is the targets that we are having at the current stage? हमारा targets आके daily time frame का next movement plan होगा. In this scenario, जो कि आके first target is at 3180, second target is at 3280, right? इस point of interest के साथ, what is the next step? Will come down to 1 hour. Oh, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Anyone has any doubts till now? हिंदी में थोड़ा.
राइट? सो इन 1 आवर हमें मेजरली किस चीजों को आइडेंटिफाई करके चलना होगा नेक्स्ट? राइट, मेजरली यहाँ पे हमारे पास सर्कुलेटिंग सप्लाई जहाँ पे बिल्ड होती है इन द करंट स्टेट ऑफ एक्शंस, सर्कुलेटिंग सप्लाई मूवमेंट एक्शन प्लान में जब आती है, इन द ब्रेक थ्रू ऑफ एक्शन प्लान वो कवर अप लेती है एंटायर सर्कुलेटिंग सप्लाई का। राइट, जब एंटायर सर्कुलेटिंग सप्लाई का कवर अप लेती है, मूवमेंट में एक ब्रेक थ्रू जनरेट होते हुए दिखता है। एंड ये सिर्फ गोल्ड में नहीं, क्रिप्टो में भी फॉलो होती है, इंडियन मार्केट्स में भी फॉलो होती है, कमोडिटीज में भी फॉलो होती है। with that it will follow in the structures of through the equities as well, right? सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमारा पास सर्कुलेटिंग सप्लाई इस जोन ऑफ एक्शन में जनरेट होते हुए दिखी थी। इस जोन ऑफ एक्शन के साथ मार्केट कंटिन्यूटी में रीबिल्ड अलोकेशन दिखने को मिले था। रीबिल्ड अलोकेशन में हमेशा क्या होता है, जो एंटायर मूवमेंट एक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग सप्लाई 50% mark out. With the 50% mark out, reallocation will be your plan of action, जो कि in this scenario मेरा setup plan है। With the setup plan, the break, right? In this allocation perspective, previous range of movement plan was as per the same. With that continuity, with the continuity, what did market tend to showcase? Market tend to showcase a break and continue. In the break and continue, 150% range out. Right? With the 150% range out, what are the major things that needs to be taken in consideration of the follow through? Where will be the action plan? The action plan will be in the liquidity calibration of 4 hours. In the state of action, this is my 4 hours liquidity calibration of the supply that will act as my current movement, because जिस तरफ का liquidity hunt होती है उसी तरफ का liquidity calibration candle resuffice होती है। In this scenario, do we have a rejection? Yes, definitely we do have a rejection. With the rejection perspective, what do we notice? We have a small range of selling pressure over here. Retailers को यहाँ पे ट्रैप किया फिर से। क्यों ट्रैप किया retailers को? Because all the retailers has a resistance line drawn, right? जब resistance line draw होती है, break एक रेजिस्टेंस लाइन अगर आप ड्रॉ किए हो, क्या करोगे? ब्रेक होने के बाद आप सोचोगे ओके यहाँ पे लिक्विडिटी ले चुका है, नीचे के लिए बैठना है। आप नीचे के लिए बैठे, बट मार्केट में यहाँ पे बिठा के इमीडिएटली मूवमेंट प्लान ऑफ एक्शन जनरेट किया। राइट, दिस कैंडल इज अ रेप्लिका ऑफ व्हाट? लिक्विडिटी कैलिब्रेशन। Right, with the liquidity calibration, what is the next step of actions that needs to be followed? With the liquidity calibration, what do we have in between of the 100% zone of action? A minimality act. With the minimality act of plan, market kya kiya? 100% zone of action create की. With the 100% zone of action, do we have the 150% rejection? Right, we do. So what will be the plan of action over here? We will reallocate the spectrum. Once we reallocate the spectrum, what is the point of interest that will be acting at the current stage? The point of interest जो act करेगा, that will be with the 50% repoint of movement. 50% repoint of movement मतलब जो भी allocation में दिखने को मिलती है, that will act as your current. 150% supply with 150% of the supply of the minimality, 200% rejection.
So this will be the 1 hour plan of action at the current state. With this current plan of actions, what are the market indications at the current point? Market क्या किया है यहाँ पे? Market एक rebuild structure के साथ हर एक point of interest में यहाँ पे हर एक लोगों को बाहर किया, correct? उसके साथ continuity in the movement generate करते हुए दिखी थी. So इस point of actions में what are the major things that you will be focusing on? चलो हमारा 4 hours का मिनिमलिटी जोन ऑफ एक्शन तो हिट हो गया, सो विल रिमूव दिस लेवल. विद दिस लेवल रिमूवमेंट हमें यहाँ पे क्या दिखने को मिलती है? हर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में प्रीवियस जोन ऑफ एक्शन, प्रीवियस जोन ऑफ एक्शन में each and every point will act as your current point. Each and every point will act as your current point. How? 15 minutes में चलिए दिखा. Right, with this zone of act, what is the market right to indicating you? The market has tried to indicate you the movement plan of action, right? Movement plan of action कैसे allocation में दिखाया है यहाँ पे? With the previous regeneration point, right? With the previous regeneration point, this was our liquidity. With this liquidity, this is our 150% supply minimality, 200% supply minimality. With that continuity of the formation. In this continuity of the formation, कल के दिन में हमने जो जो trades execute किया था, reason of plan क्या है? We will start with the bottom lineup, right? With the bottom lineup, the movement calibrate हुआ था यहाँ पे. This will be the first point of interest. With the first point of interest, market में restructure allocate हुआ था. Restructure allocate होने के बाद we had a 150% rejection. With the 150% rejection, we had a breakthrough. Reason? At the first point of supply, there was a movement structure. Yes, we had a movement structure. With this movement structure, हमें majorly क्या identify करना है? जो कि previous range of conduct. At this point of action, मेरे पास एक minimality zone of action generate होते हुए दिखा था. With the minimality zone of action, 150% rejection allocate होगा. In this scenario, this will act as my current 150%, right? With the current 150% zone of action, what did market tend to do? Market tend to create a breakthrough structure. With a breakthrough structure, re-identification of liquidity analysis and liquidity calibration. At this state of action, what do we notice? Do we have a liquidity calibration? Yes. If I zoom you, I can show you that we had a liquidity calibration. Just give me a moment. Right? So with this point of interest, where was the liquidity calibration over here? The liquidity calibration was at this point of action. When there is a liquidity calibration, what does the market tend to do? Market tend to recreate the structure with the plan. When there is a recreate structure with the plan of action, what is the first movement market generate करेगी? जो कि previous interest point range है, that will act as your current. With the current interest point range, market continued with the continuity. हमारे पास दो action plan out था with the 100% surplus of the supply. 100% supply. What is the next step? 150% minimality zone. I'll just take it from the previous, right? उसके साथ 200% minimality zone. With this point of interest, first trade of execution was with S2B1 over here, live trade.
Then before the live, we had an execution at this point of action with three-wing pool, right? With three-wing pool, what is the setup that the market had created? एक second रुको. Three-wing pull, right? Three-wing pull के साथ movement allocate हुआ था. With the movement allocation continuity, with the continuity surplus minimality zone of action 150% 200% calibrate हुई थी. With the calibration, the previous act of point हमारा जो POI range से जो retailers को trap किया था, उसी point of interest के साथ we had executed a S2B1 setup trade over here. With the S2B1 setup, there was a 250 pip trade of execution. 250 pip trade of execution के साथ we had one of the 200% demand at this point of action. उसके साथ continuity, correct? So with this, what are the next steps that needs to be taken under the consideration through the previous action plan? ये हमारा 200% का demand zone था. With the demand zone, what will be the next step? The continuity of the previous, right? The previous action plan मतलब जो हमारे पास surplus supply कहाँ पे generate होते हुए दिखी है, the surplus movement action plan was into the previous of this 200%, right? With this surplus movement identification, first point of interest कितना था? 100% का. With the 100%, we had 150%. With the 150%, 200% rejection, right? With this, what are the next steps that is being followed? What is the next step? It has been followed. The followment will always be in perspective of to the next. So 150% rejection कल के दिन में दिखने को मिली थी. With the rejection point, 200% was the spectrum. And where exactly the 200% rejection that you are identifying at the current state is into the previous point of interest of next, right? What are the next steps of action plan which will be in the act? The act will be into the previous to the next to the next. So this is the allocations that needs to be taken under the consideration. With the consideration moment, यहाँ पे एक डिमांड जनरेट होते हुए दिखी है. ये डिमांड एक्शन प्लान किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का है? ये डिमांड एक्शन प्लान was of the surplus movement. The surplus movement will act as the current, right? Is point of interest में, is this the right allocation? No, we don't have a break of structure. हमेशा body allocate करके चलना, right? With this point, the market tend to break and continue. We have a circulating supply. Circulating supply का next point of interest will be acting as my 150%. In this scenario, this will be a closure of 50% range. With the 50% range, the break, with the break continuity, right? In this zone of action, what is the major things that needs to be taken care of? Break and continue, 150% allocation, and the previous entire movement in the plan, right? With this, continuity of the movement is taken under the previous surplus of 150% range. With the 150% range, rebook allocation at the spectrum. With the spectrum continuity, rebook allocation with the spectrum continuity, right? At this point of interest, what do we notice? We have a plan of actions which will be taken under the consideration of previous.
Okay, so this is how you look for an allocation of a previous to the current. Okay, surplus supply. With the surplus supply, surplus 100% supply. With the surplus 100% supply, 200% coverage. With the 200% coverage point of action, the demand range was acted in the point of 1 and completion of the 2. Right, with this point of interest, the movement allocation is identified. Here, the demand zone of action is 150%. With the 150%, calibration move with the calibration move, 100% with the 100% continuity. Right, in the continuity plan of action, the surplus will be acted through the previous. Okay, any doubts, guys? Jack, after begging so much, he has replied. Post replying, you have deleted the message. That's nice. So sweet of you, man. जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलो यार, सब एक ही स्ट्रीम में चाहिए आप लोगों को. आज के दिन का ट्रेड we had executed with the live action plan of S2B1 setup. With S2B1 setup, the market has given the movement of 150, sorry, 530 pips. My bad.
First one is taken in the green candle only. Varsha block jack. एंड वरुण का मैसेजेस को हटाओ. किसी को भी कोई भी डाउट है, प्लीज डू आस्क. उसने क्या किया? नहीं, कुछ नहीं यार. I hate people who beg. And after begging, if they get to know the things, they should be there. The transparency should be there. If there is no transparency and they pretend to be smart, I know how to deal with them. So S to B1 and 3 wing pay. Short already है उसमें. Short is already there. S to B1 पे भी है, wing पे भी है. सुमित क्लियर हो गया डाउट? भरत क्लियर हो गया?
Is this point range, sir, currently in good? This is better. Okay, great. सो कोई भी लोग सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बात मत करो आगे जाके. यस, डेफिनेटली डाउट्स आते हैं तो पूछो, प्रॉब्लम नहीं है. स्विंग सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मूवमेंट सेलेक्ट नहीं हो रही है. इज दिस पॉइंट रेंज? गुड मॉर्निंग इमरान. कौन सा पीओए की बात कर रहे हो पटेल? टाइमिंग बता सकते हो? एट द करेंट रेंज की बात कर रहे हो? ये वाला जोन ऑफ एक्शन? ये वाला जोन ऑफ एक्शन अभी भी इंड्यूसमेंट रेंज में है, ग्रुप इंड्यूसमेंट के साथ. करेंटली यस, वो ग्रुप इंड्यूसमेंट में है पटेल. ब्यूटीफुल अरुंधति मैम. एमटीएसएल लेके चलो. I took buy in the morning 3088. I thought wing formation is there, but you said S2B1 setup. ये वाला ये वाला प्रॉपर S2B1 है. विंग कहाँ पे है यहाँ पे? ओके, विंग सेटअप के लिए 3 फॉर्मेशन जरूरी. सर मैं निफ्टी में लाइव अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे वहाँ वहाँ कंफ्यूजन होता है. और इंड्यूसमेंट में थियरी क्लियर है बट लाइव में प्रॉब्लम हो रहा है डिफरेंशिएट करने में. हाँ, समझ गया मैं. राइट, थियरी क्लियर है ना, डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स टोटली फाइन. राइट, हमेशा एक चीज याद रखो पटेल, व्हेन देयर इज ए मूवमेंट प्लान ऑफ एक्शन, करेक्ट? सो पीओए रेंज में बनने से पहले मार्केट को दोनों तरफ से विक क्रिएट करने दो. इंडियन मार्केट्स में, राइट, नॉट एवरी कैंडल विल क्रिएट द विक. 2 or 3 कैंडल्स विल क्रिएट ए विक फ्रॉम बोथ द साइड. इंडिसेस मूवमेंट जनरेट होती है. उसके बाद रेंज ऑफ एक्शन बिल्ड होता है 15 मिनट में. अगर 1 आवर टू 1.5 आवर्स जोन ऑफ एक्शन में है 15 मिनट का कैंडल, समझ लो मार्केट जोन में चला जाएगा. ओके, सो निफ्टी कल के दिन पूरा पीओए में था, क्यों? कहा गया निफ्टी. इफ यू नोटिस, मार्केट में यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से रेंज, विक, एक पॉइंट ऑफ एक्शन में आके नीचे से, ऊपर से भी विक, नीचे से भी विक, राइट. वो जोन ऑफ एक्शन को मैप अप करो, यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर जोन वाज इन द पीओए रेंज. ओके, सो नेक्स्ट टाइम से इसे फॉलो करना. ओके, सेम सिनेरियो. इफ यू वांट वन मोर एक्सप्लेनेशन, विक ऊपर से क्रिएट हुआ है एंड नीचे से भी क्रिएट हुई है, दैट विल बी अ जोन ऑफ एक्शन. 1, 2.
जब तक वहां पे आपको एक प्लान ऑफ एक्शन दिखने को नहीं मिलती है, एग्जीक्यूशन नहीं देखोगे। ओके, एम आई क्लियर? ग्रेट पुटे। डाउट्स पूछा करो यार। लय में सिखा रहा हूँ, कोर्स के बारे में पूछता है आके। What's the time zone in your chart? I need to ask questions on particular candles. UTC, this one. Currently it's 5. तू हंस ले, तू मजे ले ले। So I execute in the third candle. Yes, definitely you can look at the third candle. How will you be looking at Imran? Market rejection, rejection, third candle, the rejection and the body closure, right? This point of interest will be your lookout.
No, bro, you're getting more trades than anyone in the group. So if you help us in understanding where it will be helpful, sir is explaining great, but the other person explanation could be different. GMR, first your problem was you needed the execution of the trades. चलो यार मुश्किल हो रही है. I gave you the setup allocation on the screen. Even that is not being able to identify BU, then it's your problem that you are behind the trades and you are not interested in learning. Okay? So please don't force people over here. स्पून फीडिंग करने नहीं बैठे इधर कोई भी. सीखना है, मेहनत करो, सीखो. इतने दिन जो जो पुराने सेटअप सीख रहे थे, 2-2 साल, 3-3 साल, तब ये सब याद नहीं आया था. हाँ. एंड जो 100% काम कर रहा है उस चीज को आप लोगों को 10 दिन में सीखना चाहिए. हैव सम सेंस. लॉस करने को 2 साल चलेगा, बट सीखने को 1 महीना भी नहीं. रंजित बीटीसी चैनल में नहीं है. नो, इट्स नॉट इन चैनल. Just when you trade only gold, why you have to look for BTC at first place? कहाँ पे है चैनल में BTC? Yesterday 22:15 candle, is that a right S2 setup? Yes, this is a right one. Your execution will be here in this third candle because there was a small liquidity calibration, so the execution was taken under the place. But yes, it's the right one. Keeping in mind, Imran, I definitely understand you have the capital. People who is not having a capital, and if you look for an execution over here, the SL is 100 pips. न्यूयॉर्क सेशन में एसएल रेंज होता है 400, सॉरी 40 पिप्स की. बीटीसी में 400 पॉइंट्स की.
580 pips running. Great. All the new members, welcome to the stream. Whatever doubts you guys are having, कोई भी doubts है, please do ask. Good love to explain. भाई भरत एक चीज बता, राइट? पहला तेरा प्रॉब्लम था सप्लाई एंड डिमांड, राइट? अभी तेरा प्रॉब्लम है S1 B2 S1 B3, राइट? डेफिनेटली वो एक्सप्लेन करने के बाद और एक चीज आ जाएगा, पता है? स्टेप बाय स्टेप चलो ना भरत, स्टेप बाय स्टेप। उसके ऊपर वीडियो है, वीडियो देख लो। बैक टेस्टिंग कर रहे हो तो पहला बैक टेस्टिंग आप सप्लाई एंड डिमांड का करो ना। सप्लाई एंड डिमांड के साथ एग्जीक्यूशन ढूंढ रहे हो तो बैक टेस्टिंग कहाँ पे होगा सही तरीके से, पर, राइट? स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। सप्लाई एंड डिमांड अलोकेट करो, उसके बाद लेवल्स चेक करो, पहला क्या लेवल्स मैच हो रहे हैं? लेवल्स ही मैच नहीं हो रहे तो सेटअप लेके क्या करोगे, राइट? ऑलवेज फॉलो द लेवल्स फर्स्ट, सी वेदर इट्स टेकिंग द रिजेक्शन, राइट? वो रिजेक्शन लेने के बाद कम डाउन टू फॉरवर्ड रिले बार टेस्टिंग, उसमें चेक करो क्या रिजेक्शन तुम्हारे लेवल्स के हिसाब से रिजेक्ट हो रही है। उसके बाद जाके आप करो इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करो। लेवल्स ही परफेक्ट नहीं है, इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई कर रहे हो, राइट? Don't take me in a wrong way because of my harsh voice, but yes, follow the rules. Nitesh, someone will copy and sell it in the course. Don't worry, ma'am. हर एक चीज का कॉपीराइट है, हर एक चीज का, जो भी सिखा रहा हो। क्या कोर्स बता के भेजेगा? गुड मॉर्निंग तो सर। थोड़ी कॉपी कैट ट्रेडर्स है, वी आर इन्वेंटर्स। So we get our work patented as well as copyright, so I don't have to worry about it. आज तो चार्ट लवली दिख रहा है। आज थोड़ा पीछे रिवाइंड करके स्टार्टिंग से देखोगे ना,
पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, देख लेना, ठीक है? तो सिर्फ जब भी टाइम मिलेगा ऑफिस से, तुमको जो प्रॉब्लम थी ना सप्लाई एंड डिमांड समझने में, वो सप्लाई एंड डिमांड एक्सप्लेन किया है, राइट? रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। What will be the rights cost if someone uses it? Depends, ma. It starts with defamation of 25 crores. आज का एक्सप्लेनेशन हाई लेवल था। हाँ। थैंक यू इमरान। एंड जितने भी चैनल वाले एंड जितने भी लोग सीखना नहीं चाहते हो, आई डोंट हैव एफ प्रॉब्लम, यू कैन अनसब्सक्राइब, यू कैन लीव द स्ट्रीम। सीखने वाले हैं, बने रहो, नॉट एन इशू। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे। सीखना है, बने रहो। नहीं सीखना है, एक बहुत छोटा सा बटन है सब्सक्राइब करके एंड अनसब्सक्राइब करके, अनसब्सक्राइब करो, आराम से जाओ, जो आपको सब कुछ दे रहे हैं। ऐसे तो वो क्यों हंस रहे हो भाई मेरे गुड मॉर्निंग पे? नहीं, वो गुड मॉर्निंग पे नहीं हंसता है, कुछ और चीज पे हंसता है। Do the back testing, do the forward testing. With the forward testing, do the relay bar testing, then come to live analysis.
तो सिर्फ रेसिपी बुक अपना प्रॉफिट देखकर हंस रहा है. सर, see you at New York stream. Bye. Take care. Venkat, you can't afford it. Let it be. Learn it in life. But please tell me. Please tell it, sir. When you can't afford it, why should I waste my time and energy on explaining it? कोई भी doubts है, please do ask. No doubts for now. Then do the back testing. While doing the back testing, make sure you write down the notes. GMR live sessions daily is enough for learning and making profits. Thank you, Imran. So let's talk something about psychology. क्या जानना है psychology के बारे में?
कट कॉपी पेस्ट करके रखता हूँ, रुको एक सेकेंड। तुम्हें जो चाहिए ना मेरे पास वो रेडी है। यू वांट टू बिल्ड माइंडसेट, वेट। Smita, Ambika is in fun mode today, so let's paste it back to her. Hello, Ambika. Okay, this is the steps you need to follow. Sir, you pick previous supply and place it. How much previous back should we pick? You pick the nearest demand or nearest supply to the point of action one. वरुण, या तू एलटीडी में रहे या यूट्यूब में रहे, दोनों जगह जंबल मत कर तू। नहीं नहीं, गलत स्पॉट है, रुक जा। कितना पॉइंट का अलोकेशन देख रहा है? अगर 100 पॉइंट के अलोकेशन देख रहा है तो देख ले, प्रॉब्लम नहीं है। अगर 200 पॉइंट्स प्लस, सॉरी 200 पिप्स प्लस चाहिए, देन रुक जा। कैंडल क्लोज होने दे। हाउ मेनी डेज डू यू नीड टू क्रिएट $1 million? प्रोसेस वाइज बात करना है। तो इट्स जस्ट 6 months to generate $1 million. Anyone can do it. Anyone can do it. Step is very simple. Whatever you want to do, follow the rule of 22 by 90. Learn for 22 days, execute for 90 days. After that 90 days, the remaining 90 days is enough to generate your value of 1 M, 1 mil. 1 million is 9.35 crores. हाँ, वो इंडियन मिलियन है। That's right. But US मिलियन के हिसाब से, that is conversion देखोगे, that will be around 9.86 crores. हाँ, अगर conversion rate गूगल के हिसाब से जाओगे, then it's 8.5. I'm talking in perspective of crypto transactions. Okay. Stream will be there for next 40 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. Sir, what is the current number?
This is the current number. 152 to go. जिस दिन 152 कंप्लीट होगा लाइव स्ट्रीम बंद.
सरप्लस एक्शन प्लान से देखना टारगेट्स पर। नहीं नहीं अरुंधति मैम, सरप्लस मूवमेंट। ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल, कीप इट अप।
150 pips running. इतना छोटा कैंडल में 150 पिप्स। चलो यार हम भी थोड़ा उल्लू बनाते हैं लोगों को। इतना छोटा कैंडल, क्या बात कर रहे हो मियाँ। हमने तो पूरा रनिंग स्ट्रीम कैप्चर किया है। व्हाट ए फॉल सर, व्हाट ए क्रैश। एग्जीक्यूशन कहाँ पे हो? आउट ऑफ द स्ट्रीम। कितना छोटा मूवमेंट है इट्स। इस ट्रैप में फंसना बंद करो आप लोग। कितना छोटा मूवमेंट। अगर ये मेरा लॉन्ग का ट्रेड में 1 मिनट में या 5 मिनट में दिखाऊंगा ना, चार्ट काफी नहीं होगी। सर 1 मिनट पे एग्जीक्यूशन करना। नहीं यार, मैं इधर चिढ़ा रहा था। So there is one of the members who was saying, means in a comedy way, she said that कितना छोटा मूवमेंट है, कितना खुश होते हैं लोग। तो चलो हम भी रिटेलर्स के हिसाब से 1 मिनट में एग्जिट। इट वाज जस्ट फॉर फन। मिस्टर जादूगर कौन है जादूगर? नितेश 1 मिनट में दिखाओ ना फिर से। मैम अरुंधति मैम चुप रहो आप भी ना। फोटो लेना था। चलो फोटो लेना था तो लो, अभी भी दिखाता हूँ। ओके, आउट ऑफ द स्क्रीन। शेयर कर देना मैम फोटो।
समझ में आया फैजल? जमीन आसमान का फर्क। जो दिखता है वो बिकता है। गलत है। अगर जो दिखता है वो बिकता है के सिनेरियो में आता तो फेरारी हर एक घर में होना चाहिए था। मारुति शिफ्ट नहीं। एक चीज है, याद रखना सभी लोग, जो वैल्यू डेवलप करता है वो कोई खरीद नहीं सकता है। जो वैल्यू डेवलप नहीं कर पाता है वो सभी लोग खरीदते हैं। आज तक कोई कार देखा है क्या मारुति शिफ्ट डबल द बाइंग प्राइस जाते हुए? बट फेरारी या लैम्बोर्गिनी हमेशा जो बाइंग प्राइस है उससे ज्यादा ही बिकता है। ऑलवेज। So there is a very big difference with Maruti Shift and a Lamborghini or a Ferrari. So yes, please don't compare. जो दिखता है वो बिकता है के हिसाब से। Sir, can I take some more short to sell because now I am with you in trade? Mr. Venkat, you were never matching my speed, nor you are never in my direction of trade. So yeah, chill. My trade is running with 29.75, and you're talking about a short trade. थांबा means slow down. Yes, मराठी में correct बोला आपने. थांबा थांबा.
Because there is a song released, no? Imran? Comedy, comedy. कितना फेमस हुआ सॉन्ग? यस, बिलीनियर्स कैफे में कल वो चल रहा था। मजेदार थी वो। बट डोंट नो बट हर्ड समवेयर। ये कुम्बरी आई ऑल्सो नो। बट डोंट नो द लैंग्वेज या। आई एम नॉट इन दैट ट्रेड यार। Only Varun, Arundhati ma'am and Smita ma'am are there in that trade. I'm not a player who plays for 150 or 200 in movement like this. In a POI range, we look for 150 points. आज का सुबह का ट्रेड का तो MTSL लेने दो मेरा पहला. This trade that is still running with 430 pips. Okay, close that trade. वैसे एंट्री कहाँ किए थे? भाई लेवल्स डालने के बाद भी तुम्हें वो प्रॉब्लम है। पहले लेवल्स डालो बोलते थे, अभी लेवल डालने के बाद भी सेम प्रॉब्लम ही है ना। चेंज तो नहीं हुआ, तो इतना सजा धजा के डालने का फायदा क्या हुआ? कोंबडी खाल्ला कोंबडी खायला या सगळ्यांनी अहमदाबाद नगरला, अहमदनगरला, सॉरी. कोंबडी कोंबडी लका 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 लका. All the new members, whatever doubt you guys are having, please do ask. Where did you enter, Venkat? At first place? You haven't said me yet.
In short, 3119.7. मतलब यहाँ पे रनिंग कैंडल ट्रेड एग्जिटेड एट 3118 यहाँ पे. FOMO executions. And you asked about adding more shorts. GMR, please first learn, then execute. Thank you, guys. Thank you. It dropped up to 3114, but came back better, getting something instead of losing. इस माइंडसेट से कभी नहीं जीतोगे वेंकट. Take my words with this mindset, what you have just written, no? You will never win. A person who is scared of giving losses or of giving SLs will never sustain in the markets. Jason, going forward, if you ask anything in related to learning, I'm not going to explain it. Okay? So आज के दिन जितना भी doubts तुम्हारा था, that was the last doubts that I have explained. No more explanation will be given to you. A person who is not having a knowledge as per 1 hour back has executed a trade. That's fine, Jasam. You can unsubscribe and you can find someone who is very much interested in sharing and giving you the executions. I was scared of him when he asked for add-on. Sir, I exited because you are in long trade. I know it will go up. I am in long trade from yesterday morning. So then why did you execute this short trade? Why did you execute the BTC 1000 point short trade? Huh? Why?
So please GMR बोल रहा हूँ, Venkat, learn यार, please learn. No, you have already executed, done and dusted. Daily, I am saying you're there from 1 week, 1.5 years of back testing, 1.5 years of forward relay bar testing, then live execution, analysis, then a small value to build the confidence, then the real value execution. And it's not even been 1 week and you have started executing the trades. Why was this trade taken at first place? Say me that. Why was this trade taken? He has captured 100 pips. I don't care how much point he has captured. Let him learn and then execute. In place of 500 pips movements, he's capturing 100 pips. That too in not right direction. What is the risk to reward he is having at this place? 150 pips in an intraday. Is that the right analysis and right execution? You say me that. Don't take support at first place. सीखो यार, लाइफ लॉन्ग ट्रेड करना रहता है, रहेगा ही रहेगा आगे जाके. सीखने के टाइम पे भी ग्रीड दिखाते हो. There wasn't any setup as far as I see. Yeah, जो सिखाया उसमें कोई सेटअप नहीं है. Definitely, you're right. Right? But we have thought something over here, so that was the reason they executed the trades. So that's a different scenario altogether. जब सेटअप ही नहीं है तो ट्रेड करके क्या करोगे आप लोग, वो बताओ. And proudly is saying that done one execution. By FOMO क्यों हो रहा है? They have done it for years together. Retail traders का setup था on 5 minutes chart. देसी doji candle. You're angry? No, I'm not angry at all. Man. It's his money. He's trading. Why will I be angry? I'm just concerned these guys are not willing to back test and forward test. They just want to see the money. पुराना यूट्यूबर सब दिमाग में भर के रख दिया है. At first of all, जो भी यूट्यूबर्स 99% लोग तो एक्सनेस डेमो अकाउंट को रियल अकाउंट बता के ट्रेड कर रहे हैं.
उस पे भरोसा करके ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हो। सीखने में फोकस करो ना यार, लर्न। With knowledge, whichever direction, wherever you sit, the movement will come. Without knowledge, if you sit in the setup also, that will be SL for you. अगर नेक्स्ट टाइम किसी भी स्ट्रीम में जाते हो ना, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है किसी भी स्ट्रीम में जाने का। उसे सीखने से पहले उसका एक्सनेस अकाउंट में जो ट्रेड दिखा रहा है ना, वो ट्रेड को रिफ्रेश करा के चेक करो। अगर वो रिफ्रेश किया तुम्हारे सामने, ब्लैकआउट नहीं, ब्लैकआउट चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, रिफ्रेश मतलब वंस ही क्लिक्स द रिफ्रेश बटन, एक चीज दिखाता हूँ, रिफ्रेश होना चाहिए। एक सेकेंड, लेट मी ओपन सम टैब यार। यू अंडरस्टैंड राइट, प्रॉपर रिफ्रेश होना चाहिए। क्या ओपन करूं? कुछ तो ओपन करूं। चलो कॉइन मार्केट ओपन करते हैं। राइट, इन दिस सिनेरियो, once you open it, always remember there should be a refreshing, right? ये जो ऊपर से वो रिफ्रेश क्लिक करने के बाद जो रिफ्रेश होता है ना, वो असली रिफ्रेश होता है। ब्लैक स्क्रीन दिखा के रिफ्रेश हो गया, जो रिफ्रेश नहीं कर रहा है, बातों मानो ही मत, वो आप लोगों को फंसा रहा है डेमो अकाउंट्स में ट्रेड करके एट फर्स्ट प्लेस। एंड आप लोग अच्छी तरीके से ट्रैप भी हो रहे हो। प्रूफ पूछो। आज द प्रूफ, सेम टू रिफ्रेश। ट्रेड हिस्ट्री सब गया भाड़ में, सिर्फ रिफ्रेश करने बोल दो, काफी है। कॉमन सेंस, 10 लाख की अकाउंट दिखा रहा है, ट्रेड एग्जीक्यूशन कर रहा है 0.1 से 0.2 से, उधर ही पता चल जाएगा वो कितना ये है करके। रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहा है तो वन लॉट से ट्रेड करता हो, अगर स्मॉल स्लो एंड स्टडी ग्रोथ भी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में जाते हो, फर्स्ट चीज पूछो उसको रिफ्रेश करने के लिए। अगर वो रिफ्रेश किया, अगर ऊपर नाम चेंज नहीं हुआ या रियल से डेमो को कन्वर्ट हो गया, देन ही इज नॉट अ राइट ट्रेडर फॉर यू गाइस। प्लीज उससे दूरी बना लो। अगर वो रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद रियल एंड जो भी वैल्यू सेम दिख रही है, then you can follow the copy the trades whatever he is doing. I don't have the problem. Am I clear? But please verify करो किसको कॉपी कर रहे हो करके। आग बंद करके 20,000 लोग कॉपी करते हैं। जो वो डेमो अकाउंट में दिखा रहा है, वो आप लोग रियल अकाउंट में करके उड़ा रहे हो पैसा। कॉमन सेंस तो यूज करो पहला।
अगर इतना बोलने के बाद भी फॉलो करना है, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, कर लो, जाओ। स्ट्रीम विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, जो भी डाउट्स है पूछ लो गाइस। जितने लोग आप पैसे उड़ा रहे हो ना उन लोगों के ऊपर, उतना ही पैसा सेव कर लो, थोड़ा टाइम सीखने में डेवलप करो, वही पैसा सीखने में डालो, राइट? सीख के आगे बढ़ने में सीखो, राइट? Always remember, money is a very important game. You have to understand it very soon. You guys are in the zone of actions of inflation. Inflation जब तक बढ़ता रहेगा तब तक पैसा बहुत जरूरी है. You're not understanding the game of money. बहुत जल्द आप लोगों को समझ में आएगी. जिस दिन समझ में आएगी आपका अकाउंट में होगा. छोड़ो यार. I don't want to spoil your moods. So yes. हर एक चीज में टैक्स है, हर एक चीज में टैक्स है. Inflation rate is running with 3.5% at the current state. By next year it will be 4.3. By the next upcoming year it will be 5.67. Right? अगर आप 30,000 महीने के भी कमा रहे हो, wherever you are staying, a family of three can't survive in 30,000 at first place. And who are the people who are coming over here in a greed to trade, whose earning level is less than 20 lakh per annum? That was the only reason we have started this channel. सीखो, execute करो, and don't get trapped with anyone, please. Humble request. एक कड़वी सच बताओ, आप लोगों ने हम लोगों को कितना अमीर बनाया है लास्ट ईयर, राइट? 90% of the retailers whose earning is less than 1 lakh per month has lost in the market of 10 lakhs last year, right? And that is overall of 1.5 lakh crores, which you have given it to the people who are having knowledge and executing the trades in the markets. एंड थैंक यू, आप लोगों ने ही हम लोगों को अमीर बनाया है, बिकॉज आप लोग ग्रिड में आके ट्रेड किए, हम लोग वेट करके ट्रेड किए. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द रिटेलर्स एंड अस. थैंक यू सो मच. अगर ये बात भी समझ में नहीं आई, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोगों के लिए. एंड दैट 1 lakh crore is just of NSE and BSE. Keep in mind.
एंड प्लीज ये 3 चीजें है ना, ये 3 चीजों को ऊपर काम करना शुरू कर दो। वैल्यू ऑफ टाइम, कामनेस, ग्रीड, फोमो। प्लीज, I want to share my experience. I'm following search channel from almost 25 plus days. Not a single trade in gold even. I'm having Delta India account and ongoing closing process of Exness account. I'm still learning, not getting time to join live every day, but backtesting is in my hand and I'm doing it. Just learn, learn, learn. Thank you so much, Patel. Thank you. Trade fearlessly, follow the risk to reward, and be in the directions of the math. Control on your emotions. जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. Be in the direction, sit patiently, calmly, follow the discipline. Motivation हर एक दिन नहीं आती है. Consistency is the only key to sustain in the markets. With that, value your time because your time is very precious. With the time, every second counts because now we will not understand, you will understand it soon. Control on the greed, control on anger, control on FOMO. Trade patientfully, impatientful trade, FOMO executions, running candle executions. मत करो, कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, सीखो. बैक टेस्ट ऑफ 1.5 years, फॉरवर्ड टेस्ट ऑफ 1.5 years, with forward testing 1 month of live analysis, with 1 month of live analysis, then come with a small capital, trade, build the confidence of holding, then execute the trade with the real value. तब तक के लिए make sure you keep learning. This is Nitesh signing off. मिलते हैं शाम पे, तब तक के लिए take care, bye bye.